Okay, so dear students, today we see the acid fast staining, and this staining especially for the identification of Mycobacterium tuberculosis. Okay, so Mycobacterium tuberculosis has some specific properties, like they do have the mycolic acid in their cell walls and more amount of lipids, so that's why it is more waxy and it does not stain with the normal stains like gram stainings, safranin or the crystal violet, because those stains cannot enter into their cell walls. So that's why we need a different staining, that is the acid fast staining. Fast, that means fasting, so that means those bacteria avoid the normal stains, and they cannot be uh, stained with normal stains, and they are fasting with acids. That means if we apply the acids, something which has already entered into their cell walls cannot be eliminated by the application of this acid alcohol. So this is quite different methods from other staining methods, like uh, normal methods, methylene blue methods, or the gram stainings. So acid fast methods, in which this, suppose this is bacteria. Okay, so bacteria, here is the there is a cell wall, and here is mycolic. This is mycolic acid. Okay, so mycolic acid actually, because of this Mycobacterium tuberculosis uh, have uh, its lifespan more, and cannot be eliminated by our immune system, because it enters into the macrophage, and this mycolic acid prevents the fusion of phagosome and lysosome, so this bacteria cannot be destroyed by those methods, like the formation of the phagolysosomes. Okay, so since this is very waxy, so normal stains will not enter into the cell wall. So first we heat this cell. So heat, so some uh, uh, those lipids will melt and will allow the carbon fusion carbon fusin stain to enter in the cell wall. Okay, so this carbon fusin stain enters into the cell wall, and after staining with the carbon fusin, this bacteria will appear as red. Okay, so after staining this bacteria with the carbon fusin, this will appear red, and it will not eliminate it normally. Otherwise, what will happen if this bacteria is not Mycobacterium tuberculosis? Instead of that, it is some other bacteria. So on applying on other stains, uh, this carbon fusin, on applying on acid alcohol, this carbon fusin will come out of the cell. But in this case, this carbon fusin will not come out of the cell even after the application of acid alcohols. Okay, so this, as on the application of acid alcohol, this carbon fusin will not come out, and
this Mycobacterium tuberculosis will retain this carbon fusin. Okay, so if this bacteria does not stain with the carbon fusin, then uh, we apply the methylene blue. This, if this is other bacteria, it will is counter stain with the methylene blue and appear blue, otherwise it will appear red. So you can, and you have understood the concept of the acid fast staining. So I brief this the same thing in another language. so ये बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और इसकी जो सेल वॉल है इसमें माइकोलिक एसिड पाया जाता है। ये माइकोलिक एसिड जो है वो के कारण से मैक्रोफेज में जब ये बैक्टीरिया एंटर करता है तो उस वजह से जो फेगोसोम है और लाइसोसोम है वो कंबाइन नहीं हो पाते हैं, इस वजह से इस बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है और वो इम्यून सिस्टम को इवेड कर देता है। इम्यून सिस्टम से मतलब बच जाता है। तो इसकी स्टेनिंग की विशेष प्रॉपर्टी होती है, चूंकि इसमें माइकोलिक एसिड पाए जा रहे हैं, लिपिड पाए जा रहे हैं, सेल वॉल काफी पैक्सी हो जाती है और उस वजह से इसमें स्टेन नॉर्मली एंटर नहीं करते। लेकिन जब इसको गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद में जब कार्बन फ्यूसिन डाला जाता है तो कार्बन फ्यूसिन जो है एंटर कर जाता है, क्योंकि लिपिड थोड़ा सा मेल्ट होगा, उसमें कार्बन फ्यूसिन जाके जमा हो जाएगा और उसका चूंकि कलर जो है वो रेड टाइप का है, इसलिए जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। तो जब ये ऐड हो गया, उसके बाद में क्या करते हैं, हम एसिड एल्कोहल डालते हैं। एसिड एल्कोहल डालने से क्या है कि कार्बन फ्यूसिन जो है वो नहीं निकलता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से उसमें फिक्स हो गया है। लेकिन दूसरे बैक्टीरिया हैं तो उसमें से कार्बन फ्यूसिन निकल जाएगा, इसलिए दूसरे बैक्टीरिया तो वो उस कार्बन फ्यूसिन को रिटेन नहीं करेंगे। लेकिन इन दिस केस, एम ट्यूबरक्लोसिस के केस में वो कार्बन फ्यूजन को रिटेन करते हैं, राइट। अब उसके बाद में जब दूसरा हम मिथिलीन ब्लू स्टेन डाल देते हैं, जो काउंटर स्टेन डाल देते हैं, तो दूसरे बैक्टीरिया तो उस तरह के दिखाई देंगे, राइट। तो इस तरह से ये जो स्पेशल टाइप की स्टेनिंग करनी पड़ती है एम ट्यूबरक्लोसिस के लिए, विच इज कॉल्ड एसिड फास्ट स्टेनिंग, एंड इट्स इसको ही हम जो है जील नील्सन स्टेनिंग भी बोलते हैं। तो जील नील्सन स्टेनिंग इज एक्चुअली द एसिड फास्ट स्टेनिंग।